Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening. केमती अच्छो सब? Hello, sir. Fine, fine. How is your test preparation going on? केम चलছো? केम चलची test preparation? सर आपनको भरोसा मोरा? अच्छा. मोर वर्ष रे? How come? आज जान तो आउट किया कपल ऑफ मंथ्स. ଟିକେ ନର୍ଭସ ଫିଲ୍ ହଉଛି କି ରେ ନା एकदम पूरा माने ଭଲ କିଛି ହବ କେମିତି କଣ କି ମତେ share the experience so that I can help you. Anyone can. Preparation एकदम बिंदास रहो, मन दे की पढ़ो करो हैला. Don't unnecessary thinking avoid करो and it will fall apart. तो तमर मु कोन नेबी जानछ कि रे कम पढिबा आज Geography. some questions दीपक सर किसी डिस्कस करे थिले and other questions जोडा कि मु तुमको डिस्कस करे देबी हैला. प्रथमे just 1 second टिके जानिए जेन सब कितने पिला how many students are here? Okay, ठीक है. So start कर दो हमें क्वेश्चन स्टार्ट. गोटे सेकंड है स्क्रीन शेयर हिच रे. No, sir. No, sir. Just 1 second. Okay. Question paper समस्त रखिजो पाखरे. All are having. Okay, now we'll share the questions now. Now the screen is visible. Yes, sir. Right. So here more questions हम discuss करिवे आजी हैला. First question टा सर जति करे थिले the questions मु 6 number question टा कोन तमर अछि. Anyone can study that one. 6 question number 6 we can say. Why? Sir, why is the south? Just a minute. Yes. Why is the southwest monsoon? Why is the southwest monsoon is called Purbeya? ठीक है जी. Purbeya in Bhojpur region. What did they say? In the Bhojpur region. है question टा लिखी दिए better रहेगा. Bhojpur region and and how has this directional seasonal wind system systems influenced the very cultural influenced the
cultural ethos of the region. So very good questions of this region. Cultural ethos मोटी अंडरलाइन कर दूची को जिंस गुड़ा तमरो मेजर पॉइंट सेमती भी तमे तले मु कहबी मेंस रे तले तमे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज क्वेश्चन पेपर पाइबो जीएस रे I would suggest every year to the students माने even if prelims रे त जहा जातिला मेंस रे भी तमे कोन करिवो की पॉइंट की वर्ड्स गुडा को सबले तमे underline कर दो so that it would give an it's an impact signals to your brain, send an signal to your brain. Yes, I would have to focus on this part. जेमती कि हला cultural ethos हला particularly पूर्वेया ठीक अछि seasonal wind system. अच्छा प्रथम मिटी कहबे आंसर दिला बेले धर एने कहबे कि where is Bhojpur one by one कहबे के माने कहबो Bhojpur कोठी which region is Bihar. Bhojpur समस्त पार्टिसिपेट कर जो भी जे भी कहबो किछि नै इट्स एन ओपन डिस्कशंस हला आई वुड डेफिनेटली आई विल जॉट इट डाउन मेनी गुड पॉइंट्स जोटा जोटा हम करबा समस्त भितर तो एठी हला कि बिहार इट इज ओनली बिहार भोजपुर रीजन हम कहि परबे झारखंड सर बिहार उत्तर प्रदेश यूपी सर बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी कि मध्य प्रदेश हाउ कम ए मोर हार्ट बीट बढ़ी गेला रे मध्य प्रदेश कोड आसीओ यूपी और वेस्टर्नली बिहार पार्ट ऑफ अच्छा। झारखंड ओके जदि मु गोटे थेमेटिक मैप करछि जस्ट हैव अ लुक ओवर दिस वन हला ठीक अछि तो ए जो जिंस तमे देखु छ एठी पर्टिकुलरली हला एठी जदि तमे देखिबो एक्चुअली बिहार parts of Jharkhand and eastern UP टा तो एडे बट्टे हैला इति तमरा हैला eastern UP particularly a part टा this is eastern UP हैला and this is your eastern Uttar Pradesh then this is Bihar and this is Jharkhand मन रखो यदि particularly ए कलर टा ठीक अछि ना चेंज करिबे रे हां तो चेंज कर देन अच्छा ठीक सर अछि ब्लू कर दियंतु ब्लैक ब्लू ब्लैक आउट अछि तमरो अच्छा ब्लू टा कलर तो मिसी जियो रे बैकग्राउंड टा आई थिंक बैक इज सूटेबल हैं सर ब्लैक कर दियंतु ठीक अछि ब्लैक आउ तमरो जो एटा पिंक टा मिसी करियो हां रेड पिंक तो पर्टिकुलर तमे जे देखु छ दीस आर द रीजन्स देखो व्हिच आर मेनली नोन एज द Bhojpur region प्रथमे मन रखो I would never suggest you will go for the full diagram rather you will go for अधा diagram को जोटा कि thematic map कहंती तो तुम सेठी कहूची तो rather एठी तमे देखिबो बिहार झारखंड एंड ईस्टर्न यूपी हैला सेठी रीजन टा को प्रथम लिखियो कि this complete regions is known as your Bhojpur regions हैला अच्छा मते को अगेन जदि पुनी तळ मैप टा जदि करबी हैला एठी ओके अच्छा मते को कि से कहउछन कि हाउ द डायरेक्शनल ऑफ सीजनल विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस द कल्चरल एथोस पर्टिकुलरली हैला माने सीजनल विंड्स प्रथम कहबी को जिंसटा को से मान कहउछन कि मते कहि परिबो एनीवन कैन से को जिंसटा साउथ वेस्ट मानसून हैला तो साउथ वेस्ट मानसून तो हमर एपोटु गला हैला वी नो साउथ वेस्ट मानसून टा एपोटु एडवांस कला एंड गोटे पार्ट तमरो बे ऑफ बंगाल एपोटे गला आ गोटे अरेबियन सी पार्ट टा एपोटु गला हैला दिस आर द साउथ वेस्ट मानसून पार्ट हैला गोटे हला बीओबी ब्रांच आ गोटे तमरो अरब ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच तो एठी पुनी पूर्वे ई तो पूरा जाउची तमरो एपोटु हैला बिहार त हला एपोटे केमती होची वी कैन से I hope everyone sit with pen and paper समस्त पेन पेपर नेकी बसी छ आई गेस बसुगिरी अछि ना रे यस सर yes sir so that it will have तमरो बेसी ब्रॉडन हो जो पॉइंट गुडा हम कहि देबी सो तमे फटाफट तक लिखि नेबो हैला अच्छा वेरी गुड इवनिंग कैजुअल ओके जल्दी हे जाओ एडमिट हे जाओ ठीक अछि अच्छा मते वर्तमान को कि केमते एटा जाना पड़छ कोन हैला प्रथमे फर्स्ट पॉइंट तो लिखले भोजपुर रीजन इज नोन एज बिहार झारखंड एंड वेस्टर्न यूपी हियर आई एम राइटिंग हियर एज सॉरी ईस्टर्न यूपी रा ए प्रोविंस को नोन होची हमरो भोजपुर रीजन्स मु तुमको केवल पॉइंट आकार रे कहि दोची सोडा तमे इजी हो ताकू तुम तो एक्सप्लेन करी लिखि परियो आराम से पॉइंट आकार दे देले
ठीक अछि हां कि ना रे Sir. Yes. ओके अच्छा काहे कि एटी कह जो साउथ वेस्ट मानसून को पूर्वैया की कहि परिबो व्हाई साउथ वेस्ट मानसून इज नोन Sir, एज because of Meghalaya Plateau and the Purbanchal Himalaya changes its direction, though it's origin from the southwest part, but it moves towards the east. अच्छा because of the Meghalaya plateau and America yes Meghalaya plateau yes explain करो Purbanchal Himalaya. पूर्वांचल हिमालय वेरी गुड सो एटी जदि मु कहबी एटी तुम डायग्राम रे पुनी में देखो जदि तुम ओबे देखियो दिस इज ए पार्ट जदि देखियो दिस इज योर यू नो दिस इज योर मेघालय प्लेट्यू एंड दिस इज योर पूर्वांचल हिल्स एगुडा हैला मिरी मिस्मी अबोर हैला ए सब हिल्स गुडा एठी ठीक अछि एमाने कोन करचोंदी व्हाट दे हैव गॉटन वेरी सिग्निफिकेंट रोल और इंपोर्टेंट रोल टू डाइवर्ट आपको डाइवर्ट करिवे टू डाइवर्ट दिस योर winds means I mean southwestern winds हैला ए जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच तमर जाउची ठीक अछि पटकाई बूम बरेल एगुडा सब हैला नागा हिल्स पटकाई बूम एगुडा सब जो अछन ई जो गल्ला एठी एठी जे जितले बाडे हबो बाडे कोन करिवो एमाने बाडे की पुनी पछु को फेरिबो सो हियर इट इज नॉट द ओनली वन मन रखो एठी मु लिखि दोची बोथ द मेघालय प्लेट्यू हैला मेघालय प्लेट्यू and your Purbanchal Himalayas है ना Purbanchal Himalayas है ना underline करो जो लिखी वाले तो लिखू जो underline करो बेसी है ना so that you are helping the examiner to have an focus over that तार impression तमें नबो है ना and Purbanchal Himalayas to divert है ना the moisture laden winds the moisture laden monsoon winds माने है ना moisture laden monsoon winds southwest monsoon winds comma है ना westwards है ना westward direction है ना सो जितले से westward direction जाउची से बिहार झारखंड त माने एपट रहि गेला अरे एडी बाडे ही कि एपट को गला त माने कोन हबो हैला त माने एमान पई को पटे डायरेक्शन हलाटा पूर्व पट हला कि नै रे यस और नो हैला सो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज पूर्वैया ठीक अछि इज इट क्लियर हाई केटा हला Sir, आउ टिके कहि दे अच्छा एटी देखो प्रथम बुझले कि प्रथम क्वेश्चन हम हिट कले दीटा क्वेश्चन एक्चुअली दीटा पार्ट रे अछि पूर्वैया भोजपुर रीजन कोटा कोटा प्रथम बुझिया पड़ियो भोजपुर रीजन्स आर योर बिहार झारखंड एंड ईस्टर्न यूपी प्रथम लिखियो भोजपुर रीजन इज नोन एज दिस वन डायग्राम करी गोटे छोट थेमेटिक डायग्राम करी देखै देला एटी ईस्टर्न यूपी बिहार एंड झारखंड तापर से पचरची साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ता एग्जामिनर तमे बुझेबो कि हाउ द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आर नोन एज पूर्वैया साउथ वेस्ट मानसून विंड्स माने कोन ईस्टर्लीज हैला ईस्टर्लीज ए जो साउथ वेस्ट मानसून विंड जे कि एपट को आसी ईस्टर्न डायरेक्शन को मूव करूची वेस्ट टू ईस्ट को पुनी याको पूर्वैया केम काई कहउचंदी केमती ये तो एपट को पळेला आ वेस्टर्न पटे रहि गेले कि ईस्टर्न यूपी बिहार और झारखंड माने जोडा कि पूर्वैया कहउचंदी से जगह सॉरी भोजपुर जो एरिया कहउचंदी भोजपुर रीजन तो केमती हला तो एक्चुअली कोन हबो इट इज बिकॉज़ द प्रेजेंस ऑफ योर मेघालय प्लेट्यू दिस इज मेघालय प्लेट्यू हला एटी मु कहि दोची दिस इज मेघालय प्लेट्यू एंड पूर्वांचल हिल्स माने पूर्वांचल हिमालयन कॉम्प्लेक्स के हिल्स कॉम्प्लेक्स माने तमरो जो मिस्मी मिरी मिस्मी डाफला मिरी मिस्मी पटकाई बूम नागा हला बरेल रेंज एगुडा सब मिसी की मिकीर एगुडा सब हेला तमरो पूर्वांचल हिल्स ए माने कोन करचोंदी दीटा जंग दे आर द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ योर साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ईस्टर्ली विंड्स व्हाट दे डू से माने कोन करंती दे डाइवर्टेड बैक माने this forced backs since they are obstructing so माने बाडी ही की कोन करिवे these winds again move westwards माने एठी बाडी ही की से माने वेस्टर्न डायरेक्शन से माने मूव करंत पुनी माने ईस्ट पट को जाउतले एठी बाडी ही की से माने कोन करिवे मेघालय प्लेट्यू रे आउ एठी ईस्टर्न हिमालयन कॉम्प्लेक्स सेठी पूर्वांचल हिल्स रे बाडी ही की कोन करिवे दे मूव westwards directions so से माने को जेहेतु westward direction माने कोन पूर्वैया पार्ट रे आसीबो पूर्वैया पार्ट माने कोटा ए पटे भोजपुर रीजन को ता माने हमें जानले भोजपुर रीजन रे particularly माने बिहार झारखंड एंड ईस्टर्न यूपी these winds are blow in a eastern direction माने
पूर्व पटु से बहती से जो नाटा पूर्वैया किंतु एक्चुअली मेकानिज्म कौन ये जाइकी बाड़े होगी पुणी वेस्टवार्ड फेरुची है फॉर एमान को कौन है से पवन टा पूर्व दिगरु होची से जो ता नाटा है पूर्वैया इज इट क्लियर टू एवरीवन देखो ठीक अछि ना ओके Yes, sir. गुड मझे मझे देखो तो एडमिट हो चुके बहुत जण अच्छा नेक्स्ट पुणी हम देखिबा नेक्स्ट सेकंड कोन अछि पुणी सेकंड रे कल्चरल एथेस को केमती चेंज ଗୋଟେ सेकंड एती छोटा हो हां ठीक अछि तापर गला कोन कल्चरल एथोस एटा को मु इरेज करबी आ गोटे पार्ट आ गोटे पार्ट लिखिबी कल्चरल इथोस रे कोन होची पुणी अच्छा कौन डॉक्टर हां कोन दो कौन बानी हेलो हां कोन दो मैडम कोन कहउछन हेलो सर हां हां कोन दो आमे ऑडिबल सर एक्चुअली हमको जॉइन करी हो नथिला तो सर आउ थरे टिके शॉर्टली कह देबे कि हम से ट्राई करथिलु बट जॉइन करी कोन नथि ओके नो प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग देखि दबो हाँ ठीक है ठीक है रिकॉर्डिंग देखि नबो ठीक है जेहेतु एटा स्टार्टिंग क्वेश्चन ता जस्ट विद इन ए शॉर्ट स्पैन में कहूची तमर 6 नंबर क्वेश्चन जदी तमे देखियो पूर्वैया कोन पे को होची हला पूर्वैया भोजपुर रीजन हला तमर बिहार झारखंड और वेस्ट ईस्टर्न यूपी आ पूर्वैया इथि पे को होची साउथ वेस्ट मानसून ता मेघालय प्लेट्यू आ पूर्वांचल हिल्स हिमालय रे बाजी की पुणी ईस्टवर्ड डायरेक्शन से आसुची हला तो से जो को होची पूर्वैया अच्छा नाउ विल सी again for the next question second part ta kon cultural ethos हैला ठीक अछि cultural ethos कोन सेमती ताको अफेक्ट करछि प्रथमे cultural ethos जदि हम कहबी if I say it is welcomed by the agriculture माने farmers agriculture ऊपर कोन आर impact ठीक अछि लेखिनियो this particular season हैला this season is welcomed by हैला लिखि चला सोजन डाकुजे welcomed by farmers as they are busy in sowing crops हैला they are busy in sowing crops ठीक अछि हैला sowing crops for their livelihood जेतु तांकर सेटा जीविका से माने कोन करंती कल्चरल इथोस रे सेटा प्रथम सेटा हैला इट इज वेलकम्ड बाय द फार्मर्स माने पूर्वैया कथा कहूची पूर्वैया रे इंपैक्ट कल्चरल ऊपर सेकंड पॉइंट रे लिखि जला फटाफट बहुत स्पीड रे म कहबी हैला माने जोटी जोटा मझी रे हैला अगेन आई विल एक्सप्लेन माने जो जिंस जोटी रहि जो पचारी हैला बट बी अटेंटिव फेस्टिवल्स कोन कवर होची व्हाट इज द फेस्टिवल्स कवरिंग हियर पॉइंट देखि हैला फेस्टिवल जदि देखिबा ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम योर फेस्टिवल वेरी फेमस फेस्टिवल्स लाइक तमे सुनथिबो हैला तीज हैला बिहार रे माना जाए तीज पर्व हैला तीज छठ पूजा आल्सो कोइंसाइड करे छठ पूजा विषय जानिथिबो एंड सावन मु दिल्ली रे पढला बेले बहुत सांग तांकर सब एई छठ पूजा रे सब कोन हेटा कहन ठेकुआ बनै गाणी अट्टा रे बहुत बढ़िया बनांती से माने हैला सावन रे भी बढ़िया तांगर भोग लागे हैला मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर फॉन्ड ऑफ योर स्वीट्स हैला स्वीट सो तीज छठ पूजा और सावन रे से माने कोन करंती दे प्रे हैला दे ऑफर लिखिनिया बेसिकली दे ऑफर प्रेयर्स हैला दे ऑफर प्रेयर्स फॉर agricultural prosperity for agricultural prosperity and crops good health हैला इस फेस्टिवल से माने ई जिंसटा को करना मेजर तीज फेस्टिवल सावन हैला बेसिकली सावन तीज हैला तीज और छठ पूजा
छठ पूजा कौन हुए सरला बेल को कोइंसाइड करे बट इट इज somehow it is considered as it is fall in this particular time. थर्ड रे आउ कौन हुए many traditional dishes बने सिटी traditional dishes कौन तंगरा लेकिन पॉइंट रे traditional dishes what are the traditional dishes हैला like घुगनी बनांदे से माने घुगनी हैला सेठी भी तंगर कहते घुगनी and your Koda. ठेकुआ and पेरुकिया हैला and पेरुकिया ठेकुआ घुगनी and perukia. These are the major food dishes they enjoy. This one, even if some of the perukia, yes. Hello. Even if किछि तमरो vendors माने अछंदी और hotel से माने particular item की they earn millions of they earn in millions for this ठेकुआ even if ठेकुआ is an one of the GI tag item and this is also exported to the outside the countries also. There is good varieties of ठेकुआs also there. हैला बिहार में घुगनी भी बहुत बढ़िया बना हुए. अच्छा next fourth one तीनटा पॉइंट गला ना रे एग्री गला फेस्टिवल्स गला ट्रेडिशनल पॉइंट्स गला फोर्थ वन इज योर दैट इज ट्रेडिशनल सॉन्ग्स ठीक अछि ट्रेडिशनल सॉन्ग्स कौन हुए ट्रेडिशनल सॉन्ग रे बेसिकली इट लिखिनियो द लिरिक्स आर बेसिकली related to Purbeya festival celebration music industries and opera too माने opera industries too हैला opera industries too gets adequate income generation हैला adequate income generation during these periods लिखिनिए हैला music industries and opera industries also हैला shortly mo कहली हैला तो इधर बहुत लोगों को काम मिले जीविका मिले है ना so there is a great boost in these times music industries and opera industries gets adequate income generation during these periods okay ठीक अछि so these are the main points I think this is बहुत गुडे जिंस ए जो पॉइंट देली तुम लिखि परिबो particularly तो एठी खाली लास्ट मोड जिंस लिखिबी कि कोन हुए एक्चुअली हैला बॉडी रिव्यू तमे लिखियो कि ड्यू टू एटी खाली नोट दे गोटे मैं जिंस लिखि दोछि नोट दे के लिखुछि ड्यूरिंग दिस पीरियड heavy squalls माने heavy rainfall हैला heavy rainfall occurs हैला which heavy rainfall occurs which acts which made the local people made the regions hamlets basically hamlets माने habitation settlements or hamlets regions to construct sloping roofs in order to protect from heavy downpours or heavy rainfall सेमन तांग घर गुडा को एम छातर गुडा को ए गुडा सो बनेतन हेवी हैला that is
their hamlets are like this one. ठीक है so these are the roofs are basically हैला कोन हो जो वर्षा पानी जो splash पड़ियो splashing of rains they easily they set the rainfall माने ताको सेथरु बच्चा पे सवान करम so there is a question another that इस region रे तमरा housing constructions गुडा basically तमरा ए टाइप रहिता माने if you go to the particularly Bihar Nepal side रे जोडा दरभंगा side जो पटे that is you know that is the boundary of the Nepal सेही साइड रे तमे hamlets गुडा भी पाइबो हैला okay so this is for the first question so before I go for the next questions any questions over this one तुमको पूरा लेखि सब दे दूची जो जो जिनिस तमे भी औथरे ऐड कर परिबो हैला मन रखो हम तुम गोटे दिन से कहबी try to you know represent or present diagrams केम तुम बुझेली जदी बिहार देखो इंडिया डायग्राम करी तुम मैप देखा for diagrams I would like to say you would have get 5 marks extra मन रखो एक्स्ट्रा माने 5 मार्क्स रो जदी तमरो लेखा धर 20 मार्क पड़ला तो तमरो एटा 15 मार्क लेखिया पे 5 मार्क डायग्राम जिनसर तमे बुझी दे परिबो साउथ वेस्ट मानसून नो विंड केमती जाउ जेमती हम करथिले आउडी पुरगु हैला जेमती ई जगह में करथिली साउथ वेस्ट मानसून नो विंड टाकू केमती से आसी की बाडी होउची पुनी जाउची हैला देखि नबो रिकॉर्डिंग रे हैला so that it will have an impression of the examiner mind yes the candidates or the aspirants he knows the well he has acquainted with the things even if जदी तम पाखरे समय कम पडुची तमरो एग्जाम टाइम हेगला तमे डायग्राम करी छाडी देइछो with proper labeling then you would have get marks हैला मन रखो एक जिंस this is the tricks in geography and मन रखो ए वर्ष geography is going to the dominant paper so I don't want any of my students to lose the marks unnecessarily हैला सब tricks रे काम करो tricks रे ही मेंस बाहर हुए जेमति prelims सेमति भी मेंस हैला but it is angle is very different ठीक अछि डायग्राम माननी खाली डायग्राम करी छाड़ दबनी सर तो कहि छ इंडिया डायग्राम करी छाड़ दो डायग्राम विथ प्रॉपर लेबलिंग हैला लेबलिंग माने तमे धर बिहार एठी अछि सपोज मैं एठी डायग्राम ड्रा कला पर तमको एठी पर्टिकुलरली तमे एठी देखु छ बिहार टा एई पटे तमे धर बिहार टा नै कि एठी उत्तराखंड पकेट देखिलो इट इज कंप्लीटली रॉन्ग हैला डायग्राम माने रखो इट इज एन साइंटिफिक वे ऑफ एक्सप्रेशन इट डेफिनेटली बूस्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन बूस्ट ऑफ योर स्कोर okay I'll move to the second question. Shall I move for the second question? Yes, sir. Yes. Yes sir. Next. Right. Please note the second question now. Malikuji, one question. Just a minute. Discuss the meaning of color coded. Likhin here. This is also a very important question. Discuss the meaning. समझते खाता धरी बसो 6टा क्वेश्चंस में डिस्कस करबी जहां दो जगह लिखनी की पड़ा सब हैला डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड weather warnings for cyclone prone areas given by IMD है ना माने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आंसर मैं एठी लिखु छ हमर जागा होनी और एंटर करते न टिके देखे दा लास्ट तुम हिसो ओके अच्छा बर्तमान मते को रिसेंटली हमरा जो जाइथिला योर साइक्लोन कोनटा आइथिला कोटा ଗୋଟେ बड़ साइक्लोन जाइथिला ओडिसा रे कि इंडिया रे अम्फान सर फनी फनी तो जाइथिला ठीक अछि यस हां यस ना बर्तमान रिसेंट जोड़ा साइक्लोन बिपरजॉय इन गुजरात हां बिपरजॉय ना बिपरजॉय ना बिपरजॉय पर यस एबे वर्तमान हितला ता पूर्व तो हमर रिमार्केबल की फनी हुडहुड जो पूरीटा सबटु बेसी जो खाय के हितला आई थिंक एटा फनी नै की फनी हुडहुड हैला तितली सब थिला ना आई थिंक हां ठीक अछि ओडिसा रे सबटु मैक्सिमम डेवास्टेशन की आनथिला एबे रिसेंटली जो ईयर हुडहुड ना फनी
और फाइलिन भी आंतला फाइलिन ना फाइलिन नहीं से आंता तमर फनी जो पूरीटा जो बेसी खेती हेतला जोटा तुम कोविड आरंभ होतला एतबळे 2021 फनी सर फनी सर funny yes I think May 2021 the entirely puri maximum 2019 sir 99 तो सब बड़ा सुपर साइक्लोन 2019 नहीं नहीं हमरो एबे हेतिला ना 2021 May 5 रे जोटा हेतिला सेटा तो अच्छा अच्छा 2008 कोनटा यस थिला सर 21 रे हां 21 रे बेसतिला वेरी गुड May जोटा की 3rd May I think 21 यस थिला फनीटा थिला 2019 वेरी गुड हैला रिसेंटली जोटा हेची वर्तमान जदि पास्ट डिकेड को देखिबो सबुटु जदि डेवास्टेटिंग वन ऑफ द मोस्ट डेवास्टेटेड साइक्लोन सुपर साइक्लोन दैट वाज इन 1999 महाबात्या जोड़ा सुपर साइक्लोन हैला अक्टूबर अच्छा यस यस इट वाज October 29th October 1990 वर्तमान এই क्वेश्चन ने देखिबा कि आईएमडी कोन ये करे लेखिनियो आज पर लेकिन हम स्टार्ट करछे आज पर डिजाइन बाय सॉरी आज पर एनडीए नेशनल डिजास्टर एनडीएम हैला नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट हैला लेकिनिया इट में कहि दोची नेशनल डिजास्टर शॉर्टली लिखुची बेसी जगह नै रे सिथ में हैला नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट हैला ऑन डिफरेंट color codes for hello cyclone warnings have been facilitated. They are as follows. Number 1, yellow, that is for your cyclone alert. Number 2, orange, that is cyclone warning. Number 3, red, that is post landfall outlook. ठीक है जी post landfall outlook. तो बर्तमान यदि कलर कोड हमें देखिबा कि कलर कोड रे ही हमको करा जाए बेले बेले हमें देखिथिबो तमे जेतले हमरे न्यूज़ पेपर बाहर हैला जस्ट आई एम ड्राइंग हियर बेले बेले तुमको देखियो कि बाहर थिबो न्यूज़ रे हमें गोटे साइड रे देखुथिबा हैला सॉरी गोटे साइड रे हम देखुथिबा कि हैला एमती आसीबो हैला जस्ट इट इज सपोज द you know the very breeding ground or the genesis of the your cyclone in the Bay of Bengal बेले देखो near the Andamans or port or tomorrow Andamans or हो कि your Indonesia पाखरे हो हैला it is moving बेले दिखा है ना it is moving towards like this one एटा धीरे धीरे साइक्लोन एपड़ को मूव करे और बड़े बड़े एपड़ को मूव करे हैला से टाइम तुम देखिथिबो कि एई जगह रे तमर सब डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर्स देखिबो सपोज एटा आसी सपोज स्ट्राइक कला मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम कोठी आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम ने स्ट्राइक कला कि एपटे तमर गोपालपुर साइड कला हैला तो डिफरेंटली अकॉर्डिंगली दे स्प्रेड द your disseminate the particular your information so इटी लेखा साइक्लोन इटी particularly कौन हुए पुनी नेक्स्ट पॉइंट मु लिखुची एति कोन तो बुझी हला येलो ऑरेंज और रेड जो मु कहली यस सर ओके नेक्स्ट स्टेप रे पुनी लेखा as per IMD सर ग्रीन था ये नहीं ग्रीन टा न था ग्रीन न था बेसिकली IMD येलो ऑरेंज एंड रेड दिए सर ये ग्रीन भी था सर ग्रीन येलो ऑरेंज रेड
नहीं Green is everything okay. साइक्लोन प्रोन एरियाज रे पर्टिकुलर जितले तमर साइक्लोन आसी बेसिकली इट ऑरेंज हुए ग्रीन माने कोन ग्रीन माने तमर तो इट इज माने द Okay. it is okay माने climate is okay so there is no weather disturbance Gradual. हैला Safe then zone. कोन कहला Safe zone ta sir. सेफ जोन there is no हैला तो साइक्लोन तो सेते रहिबोनी हैला तो साइक्लोन रो माने कोन हला समथिंग व्हिच इज द यू नो अराइवल ऑफ डेवास्टेशन और लाइक और likely situations of devastating हैला तो सेई केस रे तमरो ऑरेंज येलो ऑरेंज एंड रेड अच्छा वर्तमान लिखिबा एठी मु कहि दउची तापर हम डिस्कस करबा हैला as per IMD हैला cyclone warnings are हैला are carried out in 4 stages हैला 04 तमे लिखि नहीं बोली मु लिखु छी 4 stages कौन कौन हैला नंबर 1 फर्स्ट स्टेज रे कौन रहइबो फर्स्ट स्टेज मु देबी this stage is known as pre-cyclone watch. अरे पिला का आसुंदी कि टुम टुम सुबुची गोटे सेकंड आसुंदी मोटी कर दिन हला आरी ये रहइबो अच्छा ठीक है प्री साइक्लोन वॉच है ना प्री साइक्लोन वॉच प्री साइक्लोन वॉच है ना लिखिने व्हिच इज कमा प्री साइक्लोन वॉच सब आटलास धरी बसছে रे देखु तो मजरे मजरे हम कहबे है ना प्री साइक्लोन वॉच which is issued 72 hours है in advance. Second point, first stage. ये अंडरलाइन करियो प्री साइक्लोन वॉच की आपको एमती रखियो और इशूड बाय 72 आवर्स को अंडरलाइन करियो हैला तापर नेक्स्ट लिखियो पुनी दिस ईयरली वार्निंग इज issued by की issued करे issued by DG डायरेक्टर जनरल लिखिनियो शॉर्ट टर्म को डायरेक्टर जनरल ऑफ मेटीरियोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ हैला meteorology department comma to government of India and state machineries or state machineries body state माने state governments state machinery or state governments कौन हुए की कहि परिबो here the news bulletin एटी कौन होबो the news bulletin contains development of cyclonic disturbance please underline the same development of cyclonic disturbance and cyclonic disturbance comma in the region of Indian Ocean, Bay of Bengal, or Arab Sea or Arabian Sea. First is लिखी सारल और बुझेला एनी क्वेश्चंस सो दैट मु सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज पुनी कहबी लिखि सारल जदी यस को मु आगु प्रोसीड करबी Yes, sir. Yes, sir. ठीक है नेक्स्ट
सेकंड स्टेज जगह नहीं एठी लिखि दो सेकंड स्टेज known as a stage ହେଲା short lips known as cyclone alert then underline cyclone alert So warning, no? cyclone alert ହେଲା alert करिवा there is a difference between warning and alert ହେଲା ठीक अछि cyclone alert alert ता हला तमरो जदि तमे देखो जेमति हमर होय ना कि सुपरलेटिव डिग्री गुड बेटर बेस्ट ठीक अछि बुझछ कि संगीता ना Sir, sir. जेमति हमें को गुड बेटर बेस्ट से अनुसार अलर्ट और वार्निंग भितरे अलर्ट हला पूर्व सूचना तापर हला इंटेंसिफाइड जितरा हबो सेटा को तमरा वार्निंग को हजिबो हला जो हमें कहू रागी आई वार्न यू टीचर कहते ना माने तोर इटा लास्ट चांस हला वार्न अलर्ट मींस तुमको माने सूचे दिया गला हला ठीक अछि इट्स एन सुपरलेटिव डिग्री सो साइक्लोन अलर्ट नाउ हला साइक्लोन अलर्ट issued 48 hours in advance सुना लिखिला बेले म गोटे जिंस सब कहबी अगर भी सब बेले म क्लास रे गोटे जिंस कहे हैंडराइटिंग जार जिते भलो तार एक्स्ट्रा 5 मार्क्स दे हाथ हला एटा सब वर्ष म कहि आसे हैंडराइटिंग करो सेंटेंस फॉर्मिंग कला बेले कॉमा रा इंपोर्टेंस फुल स्टॉप इट हैज टू बी hela taken care it should not be overlooked hela authoram goes you people are writing PG and above level exam so this articulates hela mane particularly these are all the ornamentals so you have to be mind the gap hela next this contains hela news bulletin likhi chala news bulletin contains the information of news bulletin contains the information on the location and intensity location and intensity I'm just underlining here location and intensity of the cyclone or storms whatever hela cyclone lekho storms lekho javi hela cyclones or storms expected direction of movement ko adu se jibo hela expected direction of movement comma intensification and underline कर चलिए है intensification and the anticipated coastal districts है ना ठीक है that bracket रे माने तमरा बुझिया पे लिखछि that may encounter माने जोटी सामने से एगुडा सब एक्सपीरियंस करबे that may encounter or experience हला हला anticipated coastal districts that experience that may experience the adverse weather condition adverse weather condition last point ithre this bulletin this news bulletin or particularly this bulletin advises to the fishermen advises to the kago advice karibo to the fishermen mane jone machwara thanti fishermen because if you see the coastal communities they are mostly their livelihood is dependent on your fishing as a habit if you go to the entire eastern coastal plain or the western coastal plains whether it is from Kutch Kathiawar to the till Kanyakumari till states to where
fishermen, then ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ରହନ୍ତି general public, okay, ହେଲା general publics, ହେଲା and etc. and the government bodies ମାନେ disaster management team, ହେଲା disaster management team ଏଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହି ଯେତା because ହେଲା etc. Third stage, second stage ହେଲା, then next ଲେଖ third stage. Third stage ରେ କିଏ? Post ରେ this is known as, देखो धीरे धीरे प्रथम कौन लिखिला प्री साइक्लोन वॉच, एबे देखुछ साइक्लोन अलर्ट, एटी एबे कौन देखिबो इट इज साइक्लोन वार्निंग, हैला साइक्लोन वार्निंग, हैला इट इज इटा issued 24 hours in advance. 24 hours in advance. की next रे पुणी लिखी चला बुलेटिन, न्यूज बुलेटिन है ना, बुलेटिन कंटेन्स कौन करे न्यूज बुलेटिन कौन कौन कहे द लैंडफॉल पॉइंट, है ना लैंडफॉल पॉइंट अंडरलाइन करो, लैंडफॉल पॉइंट is forecast at this stage. जेमती सपोज एठी हमर हला कि सपोज लैंडफॉल पॉइंट कहला कि एठी यू नो योर सुमात्रा ऊपर बांडा एक पाखरु एमती गुरी 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 सपोज एठी आसला कोठी सपोज ढाका आडगु से आसला माने योर बांग्लादेश चलो हला तो एक कैसे कि एपडु तमर हल्दिया पोर्ट पक्कु आसला हला तो सुंदरबन हां सुंदरबन्स पक्कु हल्दिया पोर्ट पक्कु आसला तो ए केस रे हला सबले मन रखो तमरो जत्ते करू दो छोटे छोटे डायग्राम दे दो, डायग्राम को केबे भी तमे लोड है कि नबनी माने हां डायग्राम बिल्कुल भी नहीं. आई होप at this माने पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेटिक लेवल एग्जाम रे one should know how to draw our own country's map, even if our Odisha map also necessary to draw this one. This give a significant impact or impression for you know to for the examiner also. Mark तो तुमको मिलियो ना हैला. So the landfall point is forecast at this stage. Next step here it likha a major point here, the concerned departments here, the concerned departments, various departments santi meteorology or disaster management, state food security, सब और इरिगेशन सब जो जो विभाग रे समस्त थांती कंसर्न डिपार्टमेंट इशूड हैला issued advice, हैला advice at 3 hours interval, प्रति इंटरवल से वन को सूचा हुए 3 hours interval, हैला about कौन about the latest position of the cyclone, latest position of the cyclone. Please underline the same, latest position of the cyclone, also its intensity, time of landfall, and expected points, expected point, हैला माने लैंडफॉल पॉइंट, एक्सपेक्टेड लैंडफॉल पॉइंट एठी लैंडफॉल पॉइंट केमती थ्रू केमती से माने जानिबे बाय कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट धरि कि से माने जानंती सेटा. ठीक अछि. थर्ड स्टेज सेट के इंपोर्टेंट इन दिस स्टेज देखि चला इन दिस स्टेज the
state governments है ना और government machineries, state government no government machineries है ना मैं सीधा लिख दूची government machineries has informed about the associated information, associated infos मैं लिख दूची information और infos about heavy squalls माने rainfall, heavy rainfall underline करी चलो strong frictional winds, strong winds खाली strong winds लिखो strong winds and strong sea waves or sea surge कहती है ना sea surge and sea waves stylish english लिखियो बेटा sea surge लिखले वैसे तुमको इंप्रेशन भल रहबो है ना sea surge है sea waves है ना और high tides है ना last point it is the general public fishermen the general public fishermen and media etc are strongly advised for do's and don'ts है ना ये particular stage is it okay shall I proceed for the next fourth stage last one Yes, sir. सर Sir, advised ପରେ କଣ ଲେଖିଲେ? हाँ କୁହନ୍ତୁ सर ए जो इवाकुएशन Sir, advised ପରେ କଣ ଲେଖିଲେ? ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ admit କରିଦେଉଛି ହଁ just 1 minute हाँ କଣ କହିଲେ advice Sir, advised for ପରେ କଣ ଲେଖିଲେ ସେଟା sir ଜାଣି ହଉନି ଦେଖା ଯାଉନି strongly advised ତାପରେ do's and don'ts माने कोटा करिबा उचित आगे। कोटा न करिबा उचित हैला माने जेमती फॉर एग्जांपल मु कहि दोची जेमती मोर स्टिल आई रिमेंबर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फनी हैला कोआ जे कि वी हैव बीन माने गुटे कोन हितला कि गुटे लोक और एबे रिसेंटली जोटा गला आई थिंक हां गुटे लोक ताकू मना करा हितला से माने कोन करनी बाहर को पळांती कार टिके कोनटा साइकिल टा उडी गला जाटी को दौड़ी पळा तो सेही समय कोन हुए आइदर your fall of tree either नडिया गछ पड़िबो कि गुटे asbestos उडी के आसी तारा टिनो ता मुंडो काट देबो तो एई टाइप रो एक्सीडेंट बहुत हुए तो जनरली सेई टाइम पे सेगुडा मना करा जाय फिशर माने जो माने साइड रे नदी गुड़िया जो आई मीन समुद्र गुड़िया घर थिबो दौड़ी के पळेबे काळे भासी गला कि हला तो कोन करंती मो डंगा भासी गला कि तो सेई टाइम रे कोन हो जीवन बिकळले से माने जानती निजर पेट पटना पय तो हठात ना सेई समय कोन हुए कि डंगा सो से माने भासी के पड़ा सो दीस आर द वार्निंग्स डूज एंड don'ts comes under ऐसे बुझियले सर ए जो सर इवाकुएशन प्रोग्राम एंड जो लाइफ स्टॉक ऑफ ह्यूमन मान इवाकुएशन को स्टेज रे सर करा जो एटा को केते आवर पूर्व ए जो जिंस रे हो पर्टिकुलरली तुम जो देखिला इन द थर्ड स्टेज बिफोर 24 आवर्स सर नहीं साइक्लोन अलर्ट कंडीशन से तुम जीवो स्टेट मशीनरीज बॉडीज बिफोर 48 आवर्स सर हां 48 आवर्स इवाकुएशन स्टेज तमर ए जगह रे होइबो हला न्यूज़ बुलेटिन फिशरमैन एडी लिखली ना ई पॉइंट रे देखो एडी रो एडी लिखछि ना ई पॉइंट रे अछि फिशरमैन जनरल पब्लिक एंड डीएम टीम अछि एटी यस सर हला ए जगह तमर इवाकुएशन सब पर्टिकुलरली सेकंड स्टेज साइक्लोन अलर्ट shall I proceed for the next proceed Yes, sir. करेंगे okay Yes, sir. यस सर यस right fourth stage ता लिखो last stage sorry the pen change होला सिर्फ कलर कोडेड क्वेश्चन रे ए सब लिखा है कि absolutely हैला काहे कि तमर एटा 20 मार्क रो जदी पढी छी तुमको कंप्लीटली कलर कोडेड माने पर्टिकुलर तम एटी से थई तो देबो कि क्वेश्चन टा कोन देला हमर पर्टिकुलरली आउथरे मु पढु छी क्वेश्चन टा कोन देला क्वेश्चन discuss the meaning of color coded weathering for cyclone prone areas given by the Indian Meteorological Department ता माने क्वेश्चन रे एक्सपेक्टेशन हैला पर्टिकुलरली तमे कोन लिखियो कलर कोड माने एई जगह रे कोन होची प्लस तमे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट रखियो कलर कोड कहां पई स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पई हैला तो एई गुडा करे टोटल अच्छा मु प्लस तुमको एक्स्ट्रा भी कहि दोची दिस मे बी ए 20 मार्क्स क्वेश्चन तो तम पाखे तो कंटेंट थिबा दरकार ने
खाली तुम कौन येलो ऑरेंज रेड लिखी दबो सर जीवो you have to be तुमको तो describe करियो पड़ियो ना कि why this color coded as needed for the cyclones हैला. So by envisaging maybe a 20 marks of question, so I would have added all these things so that it would be beneficial for you. You suppose if you confront such type of questions. ठीक है? Okay. ठीक है? सर गोटे डाउट थिला. हाँ सर एमती किछि अछि कि जे येलो टा सेकंड स्टेज रे ही दिया हबो, ऑरेंज टा थर्ड स्टेज रे दिया हबो और रेड टा फोर्थ स्टेज रे दिया हबो ना सेमती किछि नोशन नहीं. देखो particularly हम जदि कहिबा very much we can correlate that one कि प्रथम जो स्टेज टा फर्स्ट सेकंड स्टेज को हमें धरि परिबा येलो स्टेज. ठीक अछि सर. ओके सर. ठीक अछि. आउ सेकंड थर्ड को धरि परिबा तमरो कोनटा मु कहूची मिसे कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज को येलो धरि परिबो, सेकंड और थर्ड स्टेज को तमे ऑरेंज धरि परिबो हैला. आउ थर्ड और फोर्थ स्टेज को तमे धरि परिबो कोन रेड स्टेज. काई साइक्लोन रो डेवास्टेशन ता तमरा परटा मु एटा लिखि साला परे आउथरे कहूची डेवास्टेशन जेतोल हुए माने पोस्ट साइक्लोन सेतोल तुमको आहुरी डिजास्टर देखिया को पड़े. बुझियो नै कारण हेला पूर्वरु ठीक अछि हेला परे लोक मानकर बेसी और अफेक्टेड हे जाय. का घर भांग जाइतो का गोड़ भांग जाइतो कार खायक नथियो ड्रिंकिंग वाटर नथियो पानी घर भीतर थिबे हैला. तो दिस आर द पोस्ट सो वी कैन गो फॉर दैट वन रेड आल्सो हैला. एठी मु लिखुची फोर स्टेज नोन एज कोन योर पोस्ट लैंडफॉल हैला. पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक हैला. पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक that is issued 12 hours in advance before 12 hours in advance of expected time of landfall. authority के कौन सा ए जो फोर्थ स्टेज ता पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक को आजिवो जोटा कि इशूड 12 आवर्स इन एडवांस ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ लैंडफॉल माने लैंडफॉल करिवार 12 घंटा पूर्व एटा दिया जाय फोर्थ स्टेज को जोटा कि अगेन यू कैन पुट इट एज ए रेड सिग्नल हैला. मेडी कहि दूची हैला. येलो टा तमे दबो कोथरे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, ऑरेंज टा दबो हैला सेकंड हैला माने मिड ऑफ सेकंड स्टेज टू थर्ड स्टेज, देन रेड दबो हैला मिड ऑफ थर्ड स्टेज टू फोर्थ स्टेज हैला. टू एटा सब टू हैला. फर्स्ट स्टेज आरंभ मिड ऑफ द सेकंड एंड आफ्टर मिड ऑफ द सेकंड टू थर्ड, देन आफ्टर मिड ऑफ थर्ड टू फोर्थ स्टेज. these are all the segregation of your colors. ठीक है. अच्छा फोर्थ स्टेज एटा लिखिलो हैला. दिस स्टेज दिस बुलेटिन गिव्स सल्ला ए क्वेश्चन सल्ला बुलेटिन गिव्स डायरेक्शन ऑफ movement of the cyclone after its landfall. Hello? And adverse weather conditions of interior areas where this cyclonic winds proceeds. माने फॉर एग्जांपल सपोज मुठी कहली हैला ओडिसा रे सपोज हमर एठी हैला पर्टिकुलरली हमर एठी सपोज एठी हैला तो एडवांस हेई कि बेले कोन ई डायरेक्शन गला मयूरभंज सुंदरगढ़ अनुगुल हैला ए पट एरिया रे तो ए पट को इंटीरियर एरिया रे कोडे मूव कला सो ई फोर स्टेज रे देखाय. ठीक अछि. सो एठी तमे कंक्लूजन ने भी लिखि परिबो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
हैला द स्टेट मशीनरीज बॉडीज और गवर्नमेंट मशीनरी बॉडीज हैला एडी पर्टिकुलर में लिखि दोची our government machineries has alerted or addressed the coastal states to prepare for the devastating cyclones, the infrastructure देखिए कौन है infrastructure wise India has developed है advanced yearly warning system yearly सर warning कोस्टल स्टेजेस ना सर सेटा कोस्टल coastal states है states लिखছে STAT जल्दी जल्दी लिखुची तो ST के दिखाओ सुन है yearly warning systems है ठीक है so actually India learned this lesson केबे हमरो 2004 जो हमरो अर्थक्वेक आस्तला माने आई मीन सुनामी आस्तला से टू इंडिया रो yearly warning system टा हमर बहुत डेवलप है सो एथिक लेखो इट इज सफिशिएंट फॉर दिस वन ठीक अछि सर लास्ट लाइन रा आउट रेट के कोन सर कोटा लास्ट एटा सर इंडिया हैज तापरे सर इंडिया हैज डेवलप्ड हैला इंडिया हैज डेवलप्ड एडवांस yearly warning system हैला first line our government machineries has alerted or addressed the coastal states to prepare the devastating cyclones. Movement of the cyclone ta poreta se kole कोटा कहले अच्छा एटा movement of the cyclone हैला after its landfall हैला its landfall ठीक है अंडरलाइन करना आफ्टर इट्स लैंडफॉल एंड एडवर्स वेदर कंडीशंस ऑफ इंटीरियर एरियाज वेयर दिस साइक्लोन विंड्स प्रोसीड्स माने जोडक से माने मूव करंती फॉर एग्जांपल जेंति मोडी देखिली ठीक है हेलो सर हां कोंतु सर एटा हमर मॉक टेस्ट अनुसार एटा होची 10 मार्क्स र थिला ए क्वेश्चन रा हां तो हमें सीधे इंट्रोडक्शन लिखिबा देन जो कलर कोडेड वेदर मुसिरा आउट के पूर्वरु कहितले मैडम सेटा मु कहिलने 10 मार्क्स रो लिखियो 10 मार्क्स पर कंटेंट गुडा मु देली जदी सपोज तमरो मे बी इन एडवांस तमरो आसला गोटे पचार देले 20 मार्क्स रो हैला प्लस तमे खाली 10 मार्क्स रे खाली कलर कोड देले तो भी हबनी ना खाली तो तमे येलो ऑरेंज रेड टा कोठी के देबो तमे देयर इज अ वेरियस स्टेजेस आल्सो पता को नै सर मु कहूची जे लिखिची जे मु लिखिची इंट्रोडक्शन लिखिची देन कलर कोडेड वेदर वार्निंग सेटा को मु डिस्क्राइब करची येलो ऑरेंज ग्रीन और रेड को तापर जो आपण जेटा पढले वार्निंग ड्यूरिंग साइक्लोन जो पढले सेटा को मु शॉर्टकट सेटा गोटे डायग्राम भाबरे करची देन कंक्लूजन ठीक है हबरा डायग्राम भाबरे माने किछि लिखि ना खाली डायग्राम कर देछो नहीं वार्निंग ड्यूरिंग साइक्लोन ताकू करची प्री साइक्लोन वाच और साइक्लोन अलर्ट साइक्लोन वार्निंग पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक तर फ्री साइक्लोन वाच को लिखची 72 आवर्स एडवांस पुनी साइक्लोन अलर्ट को लिखची 48 आवर्स एडवांस साइक्लोन वार्निंग लिखची 24 आवर्स एडवांस पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक 12 आवर्स एडवांस बस एतके ही डायग्राम करची वेरी गुड बहुत बढ़िया बट आई वुड एडवाइस यू to write few lines means at least 1 or 2 lines मु तो लिखली गोटे जिंस तुमको प्रिपेयर कर देली कि 10 हो कि 20 हो तो लिखियो किंतु जेहेतु तुम 10 मार्क्स लिखुछो एग्जामिनर गोटे एक्सपेक्टेशन रहइबो दैट जदी तुम एटा इंडिकेट करि देलो कि निश्चित रूप से 2 लाइन तुमको लिखिया को पड़ियो कि साइक्लोनिक वार्निंग रे कोन हुए साइक्लोन अलर्ट स्टेज रे कोन हुए पोस्ट आउटलुक स्टेज रे कोन हुए सो दैट कोन हो तमरे जो 10 रु तुमको से जो 7 देई था ना सेठी तुमको डाकी कि से 9 देई दो बुझ पारला ठीक है जी सर गोटे 2 लाइन टिक एक्स्ट्रा लिख दो बहुत बढ़िया हैला आगे सर सर गोटे फॉलो अप क्वेश्चन सर थिला सर हां कोन तो सर जो सर गोटे क्वेश्चन मो माइंड केस ले जो बे ऑफ बंगाल ले सर जो फ्रीक्वेंट साइक्लोन सर काहे आछि किछि 2-3टा पॉइंट कोइ पे रही सर श्योर
Shall I erase this space? Yes, sir. Yes. Okay. Bay of Bengal रे जल्दी तमें देखियो cyclones why comes Bay of Bengal very frequently है ना? सर ता ऊपर क्वेश्चन भी अच्छी सर एथिरे. Yes, yes, yes. है ना? Why frequency of मन रखो प्रथम हैला मैं लिखि दउ छै हैला बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस दीटा जाई छै हैला जल्दी जल्दी कहि दउ छै गोटे हैला तमरो configuration हैला of Indian coastline. Second, the presence and flow of warm Indian Ocean current, warm Indian Ocean currents. Third, Sundarban Delta. no. तमर क्वेश्चन टा कोन थला why it is confirmed regularly आछि नै Yeah, yes. the impact of El Nino. ठीक अछि कॉन्फ़िगरेशन माने एटी हम कहि दउ छी कॉन्फ़िगरेशन माने समस्त बुझिनियो कॉन्फ़िगरेशन माने हला ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द कोस्ट लाइन एकु मु केंति भांगी की तीनटा अंग लिखियो 20 मार्क हेले केमति 10 मार्क हेले हम कहि दउ छी ना ट्रिक्स जियोमेट्रिकल शेप माने इंडियन कोस्ट लाइन तीन पटु बंद तीन पटु क्लोज ओनली वन आउटलेट इज ओपनिंग so that is why the heat is cannot able to disseminate खेले ही जाउनी बंद हे की रहउची. This promotes to the increasing of sea surface temperature more. केते cyclone create हेबा पई it is near about 27 degree centigrade temperature हेबा दरकार हैला किंतु एटा अधिका बढ़ी जाउची because of this kind तीन पटु क्लोज एटु क्लोज केवल गोटे साइड ओपन अछि प्रथम गला presence of flow of Indian warm ocean current काहे कि एटी सब ओशियन करंट माने पैसिफिक संगे इंटर कनेक्ट इंडियन भी ओशन सब जगह एटी बुलछन हैला ये एमती जाउची जाई कि एमती जाउची पुनी ये पुडी एमती आसुची हैला देयर इज एन फ्लो ऑफ करंट. थर्ड इंपैक्ट ऑफ एल निनो बर्तन आगु एल निनो आसिले कोन एल निनो इज एन कोन आगु थिला 7-8 वर्ष रे मझिरे आस्तरा बर्तन देखो प्रति 2 वर्ष रे अल्टरनेटिव रे पळे आस because of your abrupt rise of your oceanic water temperature. All these points has contributed okay collectively to intensifying the cyclonic situation. Sir ए जो सर अपन कहले कॉन्फ़िगरेशन सर जो कहले ज्योमेट्रिक शेप सर इट्स कैन आई कंक्लूड लाइक इट्स ए बेस स्ट्रक्चर सेट में एबला आछि बेस स्ट्रक्चर हमें बेस स्ट्रक्चर ने कंक्लूड बेस स्ट्रक्चर ने बे और गल्फ में चारि बुट है ना by default geologically by default or geologically we have the structure types माने तीन बुट क्लोज रीच एपटे मलेशिया पेनिनसुला एपटे ये सब एमती बंद हे की अछि चारि बुट तो कोड खेले हबो से तो खेले हबो पई तर जगह नै हैला आ मझरे जो टिकी रास्ता अछि मलाका स्ट्रेट सेथरे भी बाड़ा पड़ी हैला यस ठीक अछि shall I proceed for the next question? Yes sir, thank you sir. Okay, welcome. नोटा सर कौन लिखले सर impact of El Nino. Third question टा लेखरे how do the melting of Arctic ice and glaciers shall I erase this one erase this space? Yes sir. Right. Third question टा लेखो how do लेखि चलो how do the melting of Arctic ice and glaciers Arctic ice and glaciers of the Antarctic differently affect the weather pattern
and human activities on the earth, and human activities on the earth. Explain. Hello? मत कुह मुझे जस्ट ये पचार सब कहबी है बर्तमान ये जो मेल्टिंग ऑफ आइस होची या पे सबुठु मुख्य भूमिका किए हु इज द मेजर रिस्पांसिबल फॉर दिस वन ग्रीन हाउस क्लाइमेट greenhouse gases ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग अच्छा ग्लोबल वार्मिंग केमती होची ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस सर ग्रेजुअली जेते बेले टेम्परेचर तो इंक्रीज हुए तो ग्लोबल वार्मिंग हुए टेम्परेचर तो इंक्रीज हुए तो ग्लोबल वार्मिंग हुए ओके देन हाउ ये करो जे तो हु इज द मेन माने एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी सर एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई जदि तमे नेचुरल को बेसी रिस्पांसिबल काहा करबो नेचुरल को और योर एंथ्रोपोजेनेटिक Human made. एंथ्रोपोजेनिक हैला तो स्टार्टिंग तमे इथरु करिवो जस्ट पॉइंट लिख दूज फॉर ऑल सच the human activities लेके चला the human activities are chief cause shortly में लिखूँ next point कौन लिखियो पुनी since inception of the industrial revolution, the global inception means starting, the global temperature has rise to 1.5 degree centigrade more. ठीक है बढ़ी जाए ठीक है as per the report climatic report world climatic report तामने मते सर एवरेज टेम्परेचर तो सर 15 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर यस अर्थ रे सरफेस टेम्परेचर यदि हम देखिबा 15 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस तमे 1.5 डिग्री कर ने भाबु केते हॉट हेगलेन पता 16.5 नियर अबाउट हला दिस इज नाउ द मोस्ट डेवास्टेटिंग बतमान नाउ अलार्मिंग नहीं alarming alert ru sorry alert au warning to upur ku palani ebe devastating condition hala so that is why now the whole the global hala globally it is shouted that go for the green energy renewable energy source of energy okay etik likhla next par dekho it is all due to likho it is due to increase of carbon dioxide and other greenhouse gases. Carbon dioxide and other greenhouse gases. सर ओजोन होल डिप्लीशंस भी हमर सेठी अधिका थाए हाँ इतरे सब जीवो मेन पॉइंट रा हला एक्टिक आइस और ग्लासियर्स काहे की मेल्ट हो ठीक है सब इतरे CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस रे सब इतरे सर आमे सर क्वेश्चन डेबिट ही जोजंदी सर एटा सर क्वेश्चन दे जे हाउ डू मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक आइस एंड ग्लासियर्स ऑन अंटार्कटिक डिफरेंटली अफेक्ट मु वर्तमान तुमको मु बुझुची मु इटी इंटरप्ट कोच मते से आगु को बढ़िया देले मु कहबी हला मु कोची मु से पॉइंट गुडा लेके मन लेखिनी हला दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत जिंस अछि आगु कहना दिस इज ओनली मु 10% पारिची हला सॉरी सर वी हैव कंप्लीटेड 10% हला प्लीज लिसन okay no issue lekha tapare
एट मोड लेख as per report है Sir, 15% of oldest thick ice in Arctic region. Yes, कुहंतु sir, model answers provide habo na? मॉडल आंसर तो प्रोवाइड होबो कुहंतु मैडम कोन अछि असुविधा Na na. Okay. नहीं नहीं मते गोटे इनसे कहंतु इज इट ओके जो टाइप रो मु देई दउ छु डिस्कस करके लिखिवाटा ना खाली एमती ओनली डिस्कस करबी किछ लिखिबे ना जेमती हां ଏଇଟା ଠିକ ନାଇଁ ଅଛି sir ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ठीक है ବଢିଆ ଅଛି अच्छा नहीं मु इति पे कुछ जो पॉइंट रे हमें सब डिस्कस करछु सब ये रे भी तो एटा मते लागु छी कि फटाफट लिखि देना तुमर फटाफट मन भी रहबो क्विक रिवाइज भी हे जिवो हैला मॉडल आंसर तो डेफिनेटली दिया हैला ठीक है Exactly. और तापर मु तो खाली पॉइंट लिखु छी ना तो मु तो सब जिंस लिखिया भी पॉसिबल नो एठी हैला एते छोटो पेज रे ठीक है एट लिखिनियो मु पॉइंट गोटे दे छी 15% ऑफ ओल्डेस्ट एंड थिक आइस ए पॉइंट गुडा सब देखियो सब पॉइंट भी परीक्षा रे मन रख सब पॉइंट भी मन पड़िबोनी हैला जति कि एगुडा सब लिखुछु सेति कि मेजर रहइबो हैला 15% ऑफ द ओल्डेस्ट एंड थिक आइस शीट्स ऑफ आर्कटिक हैला इज ऑलरेडी गॉन पर्टिकुलर जाई सलाडी हैला एठी एबे कोन करचोंती साइंटिस्ट माने हैला साइंटिस्ट प्रेडिक्ट्स कोन करचोंती साइंटिस्ट प्रेडिक्ट्स बाय 2040 हैला हैला एटा मु ब्रैकेट रखु छी बाय 2040 द आर्कटिक हैला सॉरी द आर्कटिक रीजन हैला आर्कटिक रीजन will witness ice free summers हैला एटा गोटे हिंदू रे भी गोटे आइटर तमरो ओटा देइथला गोटे आर्टिकल कि आइस फ्री समर बाय 2040 सुधा एटा एक्सपेक्ट करा होची कि आर्कटिक रीजन देखो एगुडा हैला तमर सब केस स्टडी रिपोर्ट गुडा ए सब जिंसडा फटाफट लिखियो बहुत जिंस तुमको वेटेज मिलियो these are all the case studies as per the report by 2040 सुधा वर्तमान रिपोर्ट को होची कि आर्कटिक सी एबरे करियो एटी मु गोटे स्टार मार्क देले हैला as per the case studies ठीक अछि पुनी कोन होबो ठीक अछि कौन दला क्वेश्चन नंबर आर्कटिक मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक सी एंड ग्लेशियर्स आर एंटर डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न एंड ह्यूमन एक्टिविटीज वेदर पैटर्न बर्तमान कौन होबो पर्टिकुलरली कौन अफेक्टिंग कौन करिवो हैला अच्छा ए पार्ट सरला मु लिभी का गोटे नेक्स्ट पार्ट रे करिवि पुनी yes sir अच्छा नेक्स्ट इट लिखो कौन अफेक्ट करूची अफेक्टिंग हैला parameters लिखिने एठी फटाफट लिखो अफेक्टिंग parameters कौन होची increase of number 1 first point increase of sea level increase of sea levels and salinity levels हैला salinity levels अंडरलाइन करो सेकंड पॉइंट गुडा खाली देखो हैला माने एठी भी तुम ब्रैकेट आ गुडी लिखि परियो कि as per study 7 to 8 inches 7 to 8 inches of sea level rise since 1900 हैला 120 वर्ष भीतर वर्तमान दिखाई छी ठीक अछि एति 1900 सर हां कोंतु सर सैलिनिटी लेवल टा केमिति इंक्रीज हो जेतु आइस मेल्ट कला तो आइस मेल्ट कले पर्टिकुलर तमर कोन हो सैलिनिटी लेवल रे अफेक्ट करिवो इंक्रीज करिवो अफेक्ट भी करिवो जेमति सैलिनिटी लेवल टा हमर कोन हुए पर्टिकुलरली आइस रे कोन थाए बहुत गुडे इसन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ठीक अछि आइस रे तमे यदि देखियो आइस रो जतल तमर मेल्ट करिवो हैला तमर करंट रे फ्लो रे डिस्टर्ब होबो करंट फ्लो रे डिस्टर्ब हेले कोन होबो कोल्ड करंट ता तमर पळे आसीबो कोठी की वार्म करंट आडको कोल्ड करंट ता तमर पळे आसीबो एपड उल्टा पळे आसीबो
हैला तो से केस रे कोन हो देयर इज एन इनफ्लक्स ऑफ वाटर हैला जोथरे कि से अफेक्ट करियो सैलिनिटी लेवल को ठीक अछि राइज गोटे जगह राइज भी करियो गोटे जगह डाइल्यूट भी हबो हैला तो एठी मु कहले इंक्रीज इन सी लेवल्स एंड सैलिनिटी लेवल्स मु एठी इंक्रीज लिखिनी पर्टिकुलरली तो एठी डिस्टरप्ट हो रादर तमे इंक्रीज जगह जदी डिस्टरप्ट्स लिखियो increase of sea level and disrupts of the salinity level it will be more appropriate okay ठीक है जी ये सर जनरली हमर जो आइस सीट पूरा था से फ्रेश वाटर रही था ना सॉल्ट वाटर डेफिनेटली आइस वाटर रही रहइबो आ सेथरे भी तमर सॉल्ट वाटर मिक्सचर तो काहे कि ना जनरली देखा जाय जेहेतु एवापोरेशन से जगह रे कम थाए तो जनरली योर क्रिस्टल्स माने आई मीन योर सॉल्टी जिंस कंपोनेंट ता भीतर थाए ऑलरेडी तले सेवन आइस डिस्चार्ज हो जाए तो एटा इट अफेक्ट से जगह तमर बढ़ी जीवो से जगह काहे कि ना एवापोरेशन एकरे कम और सेठी से माने कोन थांती क्रिस्टल स्ट्रक्चर रे से लुणी माने आई मीन योर सॉल्ट कंटेंट गोटा थाए आइस भीतर तो डेफिनेटली से जगह फट फट किना बढ़ी जीवो बहुत जगह प्लस खाली सेटा नो से जगह पर्टिकुलर पानी रे इनफ्लक्स हो मिसी जीवो वार्म वाटर संगे हैला so I would rather to write as disrupts हैला सेटा गोटे डिफरेंट गोटे क्वेश्चन सर एटा माने इरोजन लागि हबो ना सैलिनिटी का करबो माने इरोजन आपन हां माने इरोड करबो माने किते बेला फ्लो कला बेला इरोड करि कि आसो ना से संगे रे आपन को माने सॉल्ट भी धरि कि आसो बोले से लागि से डिस्टर्ब करियो एरोजन तो डिफरेंट रे माने आई मीन मु बुझी पाली माने सैलिनिटी लेवल टा कोच तमे एरोजन पई हां सर हां हां सैलिनिटी लेवल कारण कोन कि माने बेसी परिमाण रे माने आइस टा मेल्टिंग हो मेल्टिंग हला पर से जाहले भी तो ये करी आसो ना सर ता बहुत एरिया रे धरि कि आसीबो बोले ता संगे संगे इरोड करी कि आसीबो इरोड कला पर काम कि आपण सॉइल जेंटा अछि सॉइल को भी से संगे संगे निकरा तो सॉइल रे सॉल्ट गुडा को थाए आ सेटा धरि कि आसला पर से डिस्टर्ब हो सैलिनिटी ओके 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 वेरी गुड बहुत बढ़िया हैला बहुत भला थॉट्स छ माने तमे एटा कोच कि मेल्ट करी आसला बेले जो कोस्टल सपोज से नॉर्वेजियन सी एपड को देकी आसी फ्रांस जर्मनी सेपड को से माने तांकर कोस्टल जगह को से तांकर सॉइल्स गुडा को अफेक्ट करिवो एंड हेंस द मिनरल कंटेंट विल इंक्रीज हेंस द योर देयरफॉर द इंक्रीज ऑफ सैलिनिटी लेवल ए ना ओके यस इट मे कंट्रीब्यूट दैट वन ओके ठीक अछि वेरी गुड नेक्स्ट पॉइंट पुन मुझे भी सी लेवल कोन अफेक्ट होची नेक्स्ट रे submergence of please note submergence of coastal submergence माने बुडी जानती submergence of अंडरलाइन करो submergence of पॉइंट गोटा खाली लिखिनिया submergence of islands कोठी in example ब्रैकेट दे दो EG in और कॉमा देखिए in Pacific Ocean Atlantic है ठीक अछि एक्सेट्रा सर ताले मैं आइस वाटर टाको कंप्लीटली फ्रेश वाटर कहबनी दैट इज अ मिक्सचर ऑफ माने मोर फ्रेश वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ सलाइन वाटर इज इट वी कैन से दैट वन काहे कि जदी तमे सेगडा देखिबो कॉन्फ़िगरेशन एटी देखो हैला आइस वाटर तमरा एक्टिक रे भी तमरा अछि आइस वाटर अछि कि नै एटी आइस वाटर अंटार्कटिका रे भी बट ह्यूमन इंटरफेरेंस कोठी बेसी अछि क्लस्टर ई पार्ट रे अछि ने यस और नो यस सर ह्यूमन Arctic region sir yes Arctic region माने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज मोर टू योर ह्यूमन सेटलमेंट्स देन द सदर्न हेमिस्फीयर yes or no so hence since the industrial activities and the human interference are more in the northern hemisphere so of course the water is coagulated or contaminated hence ice cannot be completely your pure in compared to southern hemisphere yes or no yes sir सर एटा एक्चुअली गोटे क्वेश्चन माने गोटे फंडामेंटल थला जे फ्रेश वाटर को इंक्लूड करी कि गोटे किछि क्वेश्चन थिला केते बेले जोटा कि मतलब ग्रेजुअली सेटा डिक्रीज होजे हमर थिला सेटा ग्राउंड वाटर एंड दिस आइस वाटर तो सेही कांसेप्ट रो ए क्वेश्चन टा टिके डाउट थिला अपन से टाइम पछले एटा कंप्लीटली फ्रेश वाटर इज और दिस इज द maximum amount of actually fresh water and some amount of अपन जोटा कहले crystal and all that is being there so as a result there is a mixture of fresh and all mixture of fresh जोटा कि तुम एटी देखो प्रैक्टिकली जोटा कि it is all because of your माने northern hemisphere जोटा कि हम जदी देखिबा grassroot problem तो grassroot problem टा एटा ही कोठी जेतु हमर ह्यूमन सेटलमेंट्स अछि बेसी हैला
Clear na? Is it okay? Yes sir, yes sir. Okay. Yes. सर आ गुटे एटा ए जो मेल्टिंग ता होची आइस ग्लेशियर मेल्टिंग होची एथिरे कोज रे हम एटा लिखि परिबा कि हिट बजेट ता किछि मेंशन कले ठीक होबो ना नहीं सर कोडा कहले आउथरी कहले कोडा कहउचंदी माने देखंतु सर ए जे माने मेल्टिंग होची माने आपन ग्लेशियर ता तो सर मेन जिनिस हला जे हम टेंपरेचर रे राइट होची बोले हम ए जगह रे हिट बजेट तो किछि देई परिबा कि एसिड एम आउथ एसिड टा कोन सुबुनी होते हेलो हाँ सर माने मु कहउतले कि माने जेहेतु हमें एटा मेल्टिंग माने ग्लेशियर माने हमर माने आर्टिक एगला हमर ग्लेशियर टाइटा होची त ता कोज रे हमें हीट बजेट तो किछि देई परिबा कि अच्छा हीट बजेट ना एते दरकार नहीं हीट बजेट एक्चुअली दरकार नहीं से ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर रे आसीबो हीट बजेट रे जेटा दरकार नहीं माने इट इज कंप्लीटली डाइवर्ट हे जिवो दरकार नहीं काई अननेसेसरी हमें ई करिवा हीट बजेट इज समथिंग डिफरेंट हाँ तमे जेटी लिखि परिबो हीट बजेट इज वेरी डिफरेंट वर्ड डोंट इंक्लूड हियर है दरकार नहीं रादर तमे जदी सेठी ग्रीन हाउस गैसेस रो कहि परिबो देन इट कुड हैव बी ए स्कोरिंग हैला अच्छा ठीक अछि नेक्स्ट मु कोन लिखु छी इंक्रीज ऑफ frequent coastal floods increase of frequent coastal floods ठीक है that is very much alarming now हला एग्जांपल गोटे दे देबी कहि देबी खाली कहि दोछि हला जाकर्ता ठीक अछि जाकर्ता कोठी इंडोनेशिया ओके गुड एडी तमरो आंसर को तमे एंट्रीज करिया पे कोन लिखिबो या बिकॉज़ ऑफ दिस रीजन हला इंडोनेशिया गवर्नमेंट हैज शिफ्टेड इट्स कैपिटल फ्रॉम जाकर्ता हला माने फ्रॉम जाकर्ता कोठी सुमात्रा और जाभा जाभा फ्रॉम जाभा जाकर्ता इंडोनेशिया गवर्नमेंट हैज शिफ्टेड इट्स कैपिटल फ्रॉम जाकर्ता टू कोठी नुसांतारा इज बोर्नियो आइलैंड हैला ऊपर एडी जो ऊपर आ गोटे अछि एडी बोर्नियो हैला कालीमंतन बोर्नियो ए जागु ना नुसांतारा काहे की बिकॉज़ जाकर्ता रा प्रेजेंट कोठी जाभा रे जाभा आइलैंड नुसांतारा इज इन बोर्नियो एडी तुम एग्जांपल टा दे परियो केस स्टडी अगेन हैला रीसेंट केस स्टडी एटा गोटे यस और नो हे परियो 4 नंबर यस सर okay. affects food security कौन फूड सिक्योरिटी करछि ड्यू टू increase of heat waves है ना due to increase of heat waves there is an increase of unpredictable weather or climate condition that resulted loss of ice ठीक है जी this causes sufficient damage to crops
on which global food system depends. Global food system depends. पुणी एग्जांपल तमे दे परियो जानियो जदी हैला रिसेंट हमर जो हेतिला दैट इज योर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैला वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जेतु एटी खाली कहि दउ स्टोरी आकार रे जेतु हमर रशिया यूक्रेन वॉर चलची सेटु कम अफेक्ट कला तो हमर जो इंडिया रे जो गेहूं प्रोडक्शन हैला मींस आई मीन योर व्हीट एमाने सब वेस्टर्न यूएस माने सब प्रेशर कले कि इंडिया वर्ल्ड को सप्लाई करू अरे भाई हमर तो निजर खाइबा को नै हम तुम कोन दउ एते पॉपुलेशन तो बिकॉज ऑफ ई जो हमर जो केते पर्टिकुलर जो टारगेट रो हमर 5% हम रिड्यूस कर जदि हमें लास्ट डिकेड देखिबा वी हैव गॉट सरप्लस एंड दैट इज व्हाई वी आर एक्सपोर्ट हम करथुल हैला सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पैरामीटर्स भी अफेक्ट करूची हैला किछ काहे कि ना आइस मेल्ट करची सी करंट रे चेंज होची करंट इनफ्लक्स होची जोडा कहली सो दिस आर ऑल द कंट्रीब्यूटिंग रीजंस फिफ्थ रे नेक्स्ट रे खाली एठी नो सेम जिंस भी तमर एठी भी होची यूएस रे भी होची कैलिफोर्निया साइड रे सेम जिंस तमरा चाइना भी फेस करची हैला गोटे एग्जांपल खाली दोची ठीक अछि सर एटरा में एमती लिखि परियो कि पोलर वर्टेक्स increases heat waves and unpredictable weather हां एठी ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ हीट वेव्स इट कहा जो होची पोलर वर्टेक्स जो पोलर वर्टेक्स हैला पोलर वर्टेक्स जो होची किछि नै हैला अच्छा फिफ्थ रे कोन देखिबा लॉस ऑफ मीथेन ठीक अछि लॉस ऑफ मीथेन स्टोर कोन होची एठी जदी कहबी ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ permafrost हैला sorry due to melting of permafrost FORST हैला permafrost ice permafrost माने permanently frozen मन रखो permafrost माने कौन permanently frozen हैला permanently frozen permafrost ice in Arctic region हैला मेनली आर्कटिक रीजन मेनली अंटार्कटिका भी कोन होनी हैला बट एठी भी आर्कटिक रीजन एंड अंटार्कटिक रीजन मन रखो आर्कटिक रीजन एंड अंटार्कटिक रीजन हैला द CH4 कोन हो CH4 emits to the atmosphere ठीक अछि and CH4 तुम कोची it's a greenhouse gases CH4 is a greenhouse gases hence it कौन करिवो बडी कोची जेहेतु greenhouse gases it contribute in increasing of temperature ठीक अछि and hence the melting of ice okay बुझले एतिकरे हला is it okay yes sir next point अच्छा नीरज कुछ पुनी आ उडे नेक्स्ट पॉइंट पुनी सिक्स्थ पॉइंट रे हला कोन हबो disrupting affecting the biodiversity yeah especially the aquatic or marine life next point out कोन थला तमरो हैला disrupting the ocean currents ठीक अछि differently affect the patterns and human activities कोन हबो एटी पुनी आ गोटे पॉइंट लिखिबो disrupting the ocean currents ठीक अछि disrupting the ocean currents we can say ocean current कोन melting of it लिखो melting of Antarctic glaciers हैला Antarctic glaciers lead to slowing of हैला or lead to slowing of the movement of
ocean currents. Antarctic, it is sorry, Antarctic glaciers. Antarctic glaciers, it underline karo of ocean currents. Example, Gulf Stream. Gulf Stream current. It's an it's an warm current. Warm current ता संगरे कोन भी सब न्यूट्रिएंट नहीं की जाए ई द्वारा जेतले त मेल्टिंग होची एयर मूवमेंट रा अफेक्ट होची it cannot take the nutrient rich to the to the higher latitudinal areas, so it is affecting. ठीक है, is it okay? बुझिले? Yes sir. So conclusion एटी कोन सर तमे सर आउथरेटिक के से गल्फ स्ट्रीम रो वार्म करंट से कोन कंट्रीब्यूट करे देखो एटी देखो गल्फ स्ट्रीम एटा हम इक्वेटर धरली, दिस इज इक्वेटर हैला गल्फ स्ट्रीम टा कोड बाहरची एटू बाहरची हैला गल्फ स्ट्रीम तमने देखियो यूएस रो ए कोस्ट रो बाहरची एठी गल्फ स्ट्रीम एटू बाहरी की एमती जाउची पूरा जाई 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 पूरा एकदम जाई के एठी धरची ता माने कोन एठी पाखा पाखी से इक्वेटर एरिया रो बाहरी की टिल से जाउची 66.5 आर्कटिक सर्कल पर्यंत माने कोस्ट ऑफ नॉर्वे गल्फ स्ट्रीम गलाले कोन हुए ता संगरे न्यूट्रिएंट रिच सब नै की जाए खाइबा जिंस mainly phytoplankton and because of yes phytoplankton because of this reason हला एई जगह रे न्यूफाउंडलैंड पाखरे तमर कोन होची गोटे तमर योर न्यूफाउंडलैंड पाखरे तमर ग्रैंड बैंक डेवलप होची लार्जेस्ट फिशिंग हब पुनी एठी डॉगर बैंक एई जगह रे ग्रैंड बैंक एठी हला एठी हला तमर डॉगर बैंक न्यूफाउंडलैंड नगरे सो वर्ल्ड रो दीटा मेजर फिशिंग हब एई जगह रे रहि गले तो एठी जतले गल्फ स्ट्रीम तो जतले डिस्टर्ब होची ता माने कोन हबो लोकंकर लाइवलीहुड पैटर्न अफेक्ट करियो मेराइन लाइफ को डेवलप अफेक्ट करियो वेदर पैटर्न ऑफ गुआ जाए कि जर्मनी रो और फ्रांस रो वेदर पैटर्न काफी गल्फ स्ट्रीम जो बहुत अफेक्ट कर कारण से ठंडालिया देश ए जो ओशियन कोल्ड को वार्म करंट से मानकर जो कोस्टल सिटीज गुडा को वार्मनेस पहुंचे मोस्टली अफेक्टिंग द बर्लिन हला एंड अदर द कोस्टल सिटीज ऑफ आल्सो द नॉर्वेज डेनमार्क आल्सो तो ए माने एपी गुडा जिंस डिसरप्ट होची इज इट ओके नाउ हला सर आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ लेखो नेक्स्ट क्वेश्चन रा कोन थिला आ गोटे फिफ्थ क्वेश्चन फॉर थिला तमरो डिफाइन द कॉजेस ऑफ लैंडस्लाइड्स इन द हिमालयन रीजन इट लेखो हां को कोन को कहि चलन सर अपन जो परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग कथा कहले सर सेठी आ गोटे पॉइंट ऐड कर परियो जेमती बिफोर 1 ईयर गोटे न्यूज़ आस्थिला कि रशियन साइबेरियन रीजन में परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होवा जो देयर इज ए पोटेंशियल थ्रेट टू ह्यूमन डिजीज जो वायरसेस पूरा परमाफ्रॉस्ट तळे थिला से न्यू एमर्ज होजंती अरे बिल्कुल मु तो एने एप्रिशिएट कर बहुत जिंस कहबा गुतरे बहुत जिंस अछि रे नल दे 2 घंटा कोन 4 घंटा भी हबोनी काफी वर्तमान तुम देखलो बैटुंग ग्लासियर्स प्रीलिम्स क्वेश्चन उठी के देखिछो बैटुंग ग्लासियर्स ऊपर पछनी साइबेरिया रे सेटा कोन कियो सेटा बा पछरथिला ना तोर प्रीलिम्स रे अरे बैटुंग ग्लासियर पछन नथला रशिया रे साइबेरिया रे आगे सर पछरथिला पछरथिला ना सेटा नथिंग बट हैला तुम सेटा ऐड करि परियो देखो मु तुम कोन कहिबी तुम समस्त गोटी मोर एडवाइस कि व्हेनेवर यू आर राइटिंग बहुत जिंस कंटेंट अछि यदि तुम पाखर यदि 10 मार्क या सेही अनुसार लिखो छोट छोट पॉइंट 20 मार्क यदि टिके बढ़ई कि लिखो हैला आ जो ई पॉइंट जो माने एटा इना जो कहले दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट सो यू कैन आल्सो एड्रेस कि व्हाट्स योर गुड नेम रश्मि सो रश्मि यू कैन ऐड दिस पॉइंट देयर इज नो प्रॉब्लम बहुत ही वाला पॉइंट इटा बट तमे सेतले देखियो तमरो टाइम लिमिट देखियो कोडी आइदर माने आई मीन 10 मार्क या कि 20 मार्क या कि गोटे लॉन्ग क्वेश्चन लिखुचो कि 30 माने सेही हिसाब रे तमे देबो प्रेजेंट करिवो हैला कि जदी तुमको लागु कि नै मु प्रेजेंट करने भी हैला भलो रहइबो 20 मार्क तो डेफिनेटली गो फॉर जदी लिखुचो एटलीस्ट 1 लाइन और 2 लाइन लिखियो खाली ना लिखि छाड़ देबो हैला ओके
सर मो टिके सेग्रीगेट करके लिखिथिली सर फॉर एग्जांपल मु लिखिथिली फर्स्ट इंपैक्ट ऑफ मेल्टिंग ऑन वेदर पैटर्न रे लिखिथिली सर जेमते जेट स्ट्रीम हो ग्लोबल सी लेवल राइज हो वीकेनिंग ऑफ एमोक जोटा अपन कहले परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग तापरे मु सर सेकंड सब हेडिंग दे के लिखिथिली इंपैक्ट ऑफ मेल्टिंग ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज फॉर एग्जांपल ऑन कम्युनिटीज फूड सिक्योरिटी लाइवलीहुड कोस्टल सिटीज एंती सर करी हबो सेग्रीगेट करले आराम से बहुत बढ़िया सी देखो मु आगुरी भी गोटे जिंस राइटिंग मेन सीजन ओन स्किल्स इट्स एन वेरी क्रिएटिव एक्सक्यूज मी सो मु एटी कहे कि एतिकी कि वन हु इज वेरी मच ऑर्नामेंटियस जहा पाखरे ऑर्नामेंटल अछि माने आई मीन तम पाखरे कंटेंट अछि यू कैन रिप्रेजेंट दैट वन ताकू सजेबो तो डेफिनेटली इट विल वर्क आउट किंतु सेही समय कोन देखिया को तुमको टाइम लिमिट हिसाब रे देखिया पड़ियो हैला सपोज मु जेंति कहबी गोटे सपोज 20 मार्किया मैक्सिमम 10 रु 12 मिनिट दो गोटे 10 मार्किया लिखुछो मैक्सिमम माने मु कहबी कि 6 रु 7 मिनिट दियो हैला दिस आर द टाइम 10 मार्किया पई 6 रु 7 मिनिट 20 मार्किया पई मैक्सिमम 10 मिनिट रु 11 मिनिट 12 मिनिट दो आराम से सेति के भीतर ट्राई कर हैला सो दैट कोन होबो छूट नाही तो है मु तुमको वेरी प्रैक्टिकली कहूछ मु भी लिखला वाले मैक्सिमम से 260 हैला वर्तमान आगरु थिला हमर 300 रु तो वर्तमान तम भी 250 रे भी सेही भळा सेति की मात्रा रे तमे बी श्योर दैट कि तमे जदी 210 220 कर दो छ बहुत बहुत बढ़िया तमर रही हैला वर्तमान तो टिके इजी हे छ काहे कि ना आगरु क्वेश्चंस गुडा बहुत माने वेरी टाइप रो यूपीएससी आसला वर्तमान तमर तो से पैटर्न ये हेगा नुवा पैटर्न तम आराम से हैला सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस वन कि 10 मार्क पे 6 रु 7 मिनिट दबो मैक्सिमम हैला जल्दी जल्दी से बहुत बढ़िया कथा और अदरवाइज 20 मार्क 10 रु 12 मिनिट सो इट सेव्स योर टाइम एंड पर्टिकुलर गोटे रणनीति तम पाखरे स्ट्रेटजी रहबो सो दैट हमें आराम से मूव कर पारिबो ठीक अछि फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करियो रे हैला different causes of your landslides in Himalaya and the Western Ghat वर्तमान कहा जाए आज पर again NDMA National Disaster Management Act हैला पाखापाखी your 12 to 15% लिखिनियो 12 to 15% of India's TGA total geographical area is prone to such calamity माने कोटा लैंडस्लाइड भी लैंडस्लाइड कथा पूछ हैला लैंडस्लाइड माने सच लैंडस्लाइड्स आर कॉमन कोडी कोडी देखा जाए लैंडस्लाइड आर वेरी मच कॉमन कोडी they are very common Uttarakhand Himachal Pradesh and Northeast very good they are very common हैला कोडी in Himalayan states and Western Ghats हैला Himalayan states रे कौन तार प्रॉब्लम Himalayan states रे कौन Himalayan state रे हैला को parameters mainly causes कौन what are the highly active zone sir infrastructural activity Himalayan states रे प्रथम पॉइंट जदी मु लिखिबी एटी मु सेग्रीगेट करछ हैला प्रथम पॉइंट जे मु खाली लिखि दउछु मैंने हैला एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स yes or no हैला काहे कि एटा गोटे मेजर फॉल्ट लाइन ऊपर ठुआई छी हैला साइड गोटे डायग्राम गोटे छोटिया डायग्राम गोटे कर दो एठी हैला हिमालयन प्लेट बाउंड्री ऊपर धरछ हैला एठी फॉल्ट लाइन दिस इज कंप्लीटली अ फॉल्ट लाइन ऊपर थियाई छी हिमालयन स्टेट्स गोटे हैला दिस इज एन एडी कर दो फॉल्ट लाइन this is fault line second ray mechanical structure of rock presence of very good presence of हैला मतलब लिखली presence of huge sedimentary rocks हैला ठीक है जी sedimentary rocks or sedimentary rocks nature
माने हिमालयन एगुडा कोन माने पर्टिकुलरली समान सेडिमेंटरी रॉक्स नेचर माने दे आर वेरी फ्राजाइल एंड वेरी लूज कंसोलिडेटेड समान हैला अनकंसोलिडेटेड सॉरी माने समान बहुत लूज और अनकंसोलिडेटेड माने पानी पड़ला माने बोहि जिवे संगे संग हैला से जिमु लिखली कोन सेडिमेंटरी रॉक्स नेचर कोन दे आर वेरी एटी तुम ब्रैकेट लिखि देउ छु तुम हिंट पई तमरो अनकंसोलिडेटेड हैला अनकंसोलिडेटेड एंड फ्रैगमेंटेड ठीक अछि लूज बाइंडिंग थर्ड anthropogenetic factors young fold mountain कथा बिट लिखे होगी इट लिखली एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स मेजर फॉल्ट लाइंस सेतिर पळेला सब थी गुडा हैला एतिर पळेला एटा टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स ठीक अछि अच्छा एंथ्रोपोजेनेटिक फैक्टर्स में कोन लिखिबी इतरे सर इलीगल माइनिंग भी होची एटी लिखुची कोन हबो एंथ्रोपोजेनेटिक फैक्टर्स रे construction of dams, hotels and recreation centers, human settlements, सर mining activities हिमालय जगह भी बहुत जगह mining activities माने पाउचन सब हैला so these are the things हां कोन कहथले हां सर रिसेंटली जो उत्तराखंड रे हेतला जो लैंडस्लाइड सर ए एंथ्रोपोजेनिक बिल्कुल उत्तराखंड बर्तन समान कोन करिबा को ह्यूमन सेटलमेंट समान कोन गले जागा सब बिकी दोछ अरे तमे प्रथमे देखो घर बने तुम देखतो ना घर गुडा केंती माने कागज डंगा भलिया घर गुडा बोही जाउतला हो कि नै ठीक है लोगो को चार्जर लगैलु सर एंड सर गोटे वन मोर सर जो गवर्नमेंट सर टूरिज्म को बढ़ावा द पे सर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बेसी करूची जादर की लैंडस्लाइड भी बेसी पुणी होची वर्तमान एटा गवर्नमेंट पे बहुत बड़ शिक्षा गवर्नमेंट पे तमे जो तमरा टूरिज्म ना रे सर इंफ्रास्ट्रक्चर को समान बेसी बढ़ावा तमे जो वर्तमान जो इको टूरिज्म कांसेप्ट कहउतला वर्तमान ग्रीन टूरिज्म आसी गला इको हटी गला ग्रीन टूरिज्म करो भाई नाले की बंचिले सिना रहइबो की वर्तमान ए जो जोशी मठ जो प्रॉब्लम जेंती होची जोशी मठ केस रे तो तमरा पर्टिकुलरली एटा मु तो कहबी आपन लैंड सब्सिडेंस हेतिला सेटा एनटीपीसी आउ एम संपूर्ण रूप दाई प्लस एटा ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ पर्टिकुलरली ए जो एटा एंथ्रोपोजेनेटिक केस रे आसियो किंतु कोन करियो डेवलपमेंट भी दरकार सर गवर्नमेंट डेवलप करियानो मेन कारण हो जे चाइना रे जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज गुडा को अछि सेटा भी गोटे कारण डेफिनेटली सुनो बहुत जगह रे ना देखो गवर्नमेंट हैज टू ओवरलुक तुम देखलो जोशी मठ केस रे टोटल गवर्नमेंट वाज कंप्लीटली साइलेंट इवन इफ दोस पीपल से माने जति सिटी तांकर एसेट थिला ताटू 2.5 गुण अधिक से माने तांको मिलला सब घर जगह जमी बाड़ी पैसा सब मिलला बट गवर्नमेंट हैज टू डू दैट वन बिकॉज़ मन रखो नेशनल सिक्योरिटी आल्सो इज अ मेजर कांसेप्ट फॉर आवर कंट्री से केस रे बिल्कुल कहले बहुत जिंस इत्र पॉइंट अछि ता माने सित्र होई जिवो कोन ता माने कोन जदी मु गोटे क्रिएटिव वे रे कहबी डज इट मीन दैट बिकॉज़ ऑफ दिस हिमालयन रीजन इज एन इको फ्राजाइल रीजन अ सेंसिटिव रीजन डज वी मीन दैट वी विल कंप्लीटली इनहिबिट द प्रोग्रेस एब्सोल्युटली नो काहेकि ना कंट्री रो प्रोग्रेस सब भी दरकार बट इट हैज टू बी इन ए बैलेंस वे हला ठीक अछि आगु बढ़िबा एति के सर गोटे एंटरप्रेन्योरशिप रे हे परिबो सर प्रैक्टिस ऑफ झूम कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्ट रीजन्स हाँ बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट रीजन रे तो लैंडस्लाइड पे भी सेटा गोटे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नॉर्थ ईस्ट हिमालयस रे नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन झूम कल्टीवेशन है ना झूम कल्टीवेशन यू कैन ऐड इन देयर इज आल्सो पर्टिकुलरली इन मणिपुर सर लॉस ऑफ वेजिटेशन भी गोटे हे परियो माने धर 100 200 वर्ष रे गोटे गछ धर जेती गोटे माने से होउची हमें गवर्नमेंट कहूची कि नै हमें प्लांटेशन करूछु बट गोटे न्यू प्लांट सेति की बेनिफिट दे परिबोनी जना गोटे ओल्डर प्लांट एटा को केस रे कहउछ एठी सर डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन अच्छा ओके एटा एक जो जिंसरा कहलो इट इज ऑल यू नो लॉस ऑफ वेजिटेशन यू कैन तमे एई पॉइंट रे माइनिंग एक्टिविटीज रे कहि परिबो हला माइनिंग एक्टिविटीज मान कोन और की सेटलमेंट माने एई पॉइंट रे एंथ्रोपोजेनेटिक फैक्टर की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होची माइनिंग एक्टिविटी से जन गच्छ हाणी पकोचंती आ पुराना गच्छ रो जेति की तार ग्रिपिंग थाए सॉइल रो ग्रिप करी माने जाबुडी की धरे गोटे नुवा गच्छ सेति कर परिबोनी तो बड़ गच्छ गोटे जदी कटा हबो सो डेफिनेटली ओवर दैट सपोज 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया रे गोटे बड़ लार्ज स्केल अफेक्ट हबो जदी अफेक्ट हला बोही के आले तळ पटरे जो गां थियो सब भसी के पळेबो हला these are all the causes सर जेमि फ्लैश फ्लड होउची सेटा भी तो गोटे रहइबो ना कारण
फ्लाश फ्लड देखो दीटा जिंस हुए क्लाउड बर्स्ट में भी हुए फ्लाश फ्लड हैला क्लाउड बर्स्ट इज द मेजर रीजन क्लाउड बर्स्ट में हैला नेचुरल कॉज सेटा पळे आसे सर लैंडस्लाइड नेचुरल क्लाउड हो जे किंतु क्वेश्चन हमर अछि एटी लैंडस्लाइड पई रे हैला लैंडस्लाइड पई जदी हमर अछि क्लाउड बर्स्ट रे डिफरेंट साइड रे क्वेश्चन हेबो तो क्लाउड बर्स्ट तमे एटा ही पटक लिखि परिबो पर्टिकुलर टेक्टोनिक प्लेट ह्यूज सेडिमेंटेड एंथ्रोजेनिक हैला क्लाउड बर्स्ट गोटे डिफरेंट हे जो सर एक्चुअली सर फ्लैश फ्लड ट्रिगर करे लैंडस्लाइड्स को बाय इरोडिंग द सॉइल सेमती जदी कहिबो पर्टिकुलरली तमे नेचुरल जदी कहूचो हैला तमे एटी लिखि परिबो कि एवलांचे हैला एवलांचे भी हे परिबो हैला एंड क्लाउड बर्स्ट भी हे परिबो तो लिखि परिबो हेवी रेनफॉल एंड हेवी रेनफॉल तीनटा पॉइंट जदी देबो चाहछु टोटल किंतु एगुडा माने खाली पॉइंट मु डिस्कस करछि हैला 20 मार्क में बहुत बड़ होई जो एवलांचे माने कोन सडन माने ब्रेक कर जो एवलांचे माने हला यस एनीवन एल्स वर्तमान जो धोलीगंगा ऋषिगंगा जो हेतिला 2020 रे डिसेंबर रे हला से एवलांचे हेतिला हठात किना कोन हला ग्लेशियर मेल्ट हला खसी पड़ला पानी गड पला जमा हला पूरा फटै देला दिदीटा एनएचपीसी रे हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर फटै देला से हला एवलांचे माने ग्लेशियर मेल्ट क्लाउड बर्स्ट हला तमर एटा पई आ हेवी रेनफॉल जोटा कि एथर का बेसी हेतिला हला ठीक अछि साले प्रोसीड फॉर द वेस्टर्न घाट यस सर यस सर लैंडस्लाइड विषय कोइ एता लिखबा कोन दरकार अछि वेस्टर्न घाट रे फर्स्ट पॉइंट में लिखि परबा मेजर कॉज ऑफ हैला वेस्टर्न घाट रे कोन लिखबा मेजर कॉज ऑफ हैला सॉरी मेजर कॉज कोन अनऑथराइज्ड mining activities. Second, prone to high intensity of rainfall. Third, deforestation and road construction road and railway जहाँ भी ठीक है these are the western घाट रे ठीक है unauthorized mining activities होची सेठी जेमती फॉर एग्जांपल if I say western घाट रे particularly तमरो एठी सपोज मु कोंकणी माने एठी नो जो मैंगलोर पाखरे ठीक है तो ये जगह से माने रत्नागिरी ए जो अच्छी एपट एरिया रे हैला सिंस देयर इज एन प्रिवेलेंस ऑफ हाई ग्रेड हेमाटाइट आयरन ओर सो सेठी से माने गुडी बहुत एठी तमरो इलीगल माइनिंग होची पर्टिकुलरली हैला कर्नाटक आ गोवा एपट एरिया रे हैला गोवा एपट जगह रे कुद्रे मुग भी सपोर्ट हैला तो ये गुडा नहीं ठीक है इज इट ओके शैल आई मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन सर केरला सर इतरे विंड मिल कंस्ट्रक्शन नहीं परिबा इतरे कोन कहले विंड मिल कंस्ट्रक्शन तार मूवमेंट लागि फ्रैक्चर सृष्टि होची माउंटेन एरिया गोटा करे हम कहि परिबा विंड मिल भी हम कहि परिबा हैला बट विंड मिल रे जेमति तमे पर्टिकुलरली देखिबो विंड मिल पहाड़ ऊपर बेसी हुए एते सिग्निफिकेंट इफेक्ट नाही बरन तमे रादर जदी कहि परिबो रेलवे टनल्स हैला वर्तमान जो रेलवे टनल्स कोंकणी रेलवे कोन करछु मु तुम कहि दोजी हैला कोंकणी रेलवे टनल सिटी बना होची माने एक्चुअली वेस्टर्न घाट कोन पूरा चिपकी के होची ने सरू साप भलिया तार एमती हेची से हैला नेरो तो ताकू से माने फटे की करछन तमे दि सेही पॉइंट रे तमे दि रेलवे टनल्स कथा कहबो इट कुड हैव मोर आई थिंक इंपैक्ट ऑन योर आंसर ठीक अछि विंड मिल्स जनरली पहाड़ ऊपर रखा होची वेस्टर्न घाट ऊपर तो सेटा तो बेसी होनी रादर तमे इंफ्रास्ट्रक्चर वे रेलवे टनल कहबो कारण रेलवे टनल कोन गुटे माने लॉन्ग स्पैन 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर एमती हला बट विंड मिल कोन वेरी कंसाइज मे बी फ्यू मीटर्स ठीक अछि इज इट ओके सर केरला रे जो लैंडस्लाइड हेतला सेटा देई परिबा की एग्जांपल रे हां हेवी रेनफॉल म कहल ना हेवी रेनफॉल भी तो देली ना प्रोन टू हाई इंटेंसिटी रेनफॉल से जगह रे अपन देई परिबे कि केरला रे एग्जांपल एटा पॉइंट गुडा लिखित पॉइंट गुडा को एलाबोरेट कर परिबे केरला रेनफॉल वेस्टर्न घाट रे मोस्टली देखियो जो स्लोप टाइप माउंटेन्स ना सेटा भी लैंडस्लाइड सेति पे ना इरोजन हो जाय बेसी
वेस्टर्न घाट रे पर्टिकुलरली माने देखो माउंटेन्स माने तो स्लोपी वेस्टर्न घाट इफ यू कंपेयर टू द योर हिमालय इट इज कंप्लीटली डिफरेंट ठीक है वेस्टर्न घाट इज ए रिजिड स्ट्रक्चर इट इज नॉट एन सेडिमेंटरी रॉक फर्स्ट है प्रथम कथा वेस्टर्न घाट जानियो इट इज नॉट एन सेडिमेंटरी रॉक्स हिमालय रा स्ट्रक्चर माने तार जो कंपोजिशन रॉक रा यार स्ट्रक्चर भीतर कंप्लीटली डिफरेंट इज इट क्लियर है ना Yes, sir. it is more igneous that is sedimentary है so erosional part is rather more there and less here ठीक है जी okay I'll proceed for the next question number सर यार कंक्लूजन टा केमती लिखि उठी डिटेक्ट कर देबे एटी लिखि परिबो कंक्लूजन रे the government and the government machineries the government has taken many decisive steps to curb such illegal anthropogenetic activities. Even the intervene of judiciary is appreciable, the recent verdict of Honorable Supreme Court Honorable Supreme Court by Kasturi Rangan notification or committee जो भी है ना on illegal activities and such ecological fragile zone is admirable. Government has to, second point, government or state governments, state machineries should implement and vigilant implement stringent laws to mitigate over such situations है ना ठीक है एतिक लेखा इज इट ओके सर इंप्लीमेंट पर कोन लिखा implement stringent है ना implement stringent laws to mitigate over such situation. Is it okay? Shall I proceed for the next question? Hello? Yes, sir. Yes, sir. तमरा किछ नेक्स्ट अछि कि क्लास एबे एति करबी ना आउ कोन अछि ना नेक्स्ट क्लास एथिक्स केते बेला अछि रे 7टा एबे सर लिंक आसी साइलानी ऑलरेडी 7 PM कहले सर लिंक ऑलरेडी आसी साइलानी ठीक अछि ताले मु आज एति कि रखु छी वी विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट पुनी हैला 4 नंबर जाय ओके सर हां कोन सर क्वेश्चन थिला सर काली की टेस्ट हबो ना नहीं सर
एक्चुअली मु तो अभी कटक रे माने मु देखिबी आई वाज नॉट इंटिमेटेड दैट वन मु दीपक सर से कथा हुए देखिया हैला मो पाखरे एबे न्यूज़ नै रे मु देखे सर को पचारे मु तो एपटे कटक रे बससी माने एपटे आई वाज इनोवेटेड हैला हेले तुम तो आसी जीव रे ना तुमको आसी जीव ना इतरे नोट माने ग्रुप रे आसी जीव ना मेसेज हैला एक्चुअली सिलेबस अनुसार हब्बा कथा किंतु के जानी कहि होबनी सर अरे नो इश्यू तमे आराम से तमे जितकी जोड़ा दिया होची पढ़ी पढ़ी चला तो अच्छी माने ये आराम से बट सीरियस बट बेसीटा माने पैनिक होनी हैला ठीक अछि सीरियस बहुत बढ़िया लाग जा जिंती अछि अब मु कहि दउ सर को जदी हबो न हबो ग्रुप रे मेसेज टा डिलीवर कर दे हैला रोज ताले थैंक यू ऑल ऑफ यू विल मीट अगेन क्लास भल लागला रे थैंक यू सर ठीक अछि यस सर हां सर yes sir बोल थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर सर आपण ही ज्योग्राफी क्लास नेबे सर थैंक यू हाँ मु नहीं मते सर जानि छ कि ज्योग्राफी और एग्रीकल्चरल सर आपण क्लास करथले ना स्ति पई हाँ हाँ मु ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट नहीं ऑप्शनल भी आज्ञा नहीं सर आपण ही नेबे हाँ ठीक अछि कहि देबी हला सर को कहबो जे अनुसार स्लॉट देले पड़े मुई करबी हला ए पैक शेड्यूल रहउची तो ठीक अछि मु कहि देबी कहले कहि देबी सामने सर को कहबो हला ओके आज्ञा सर थैंक यू ऑल ऑफ यू विल मीट अगेन थैंक यू सर thank you sir थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर Thank you, Shubham Vaidya.